हेलो हाई 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 जय जगन्नाथ बंधुगण आउ किपरि अछंती आपण माने घरे खियापिया चलची ना नहीं आईपीएल मस्त देखुथियो मजा लगुची आउ कौन चली सब कालर भिडियोटा केमती लगला जदि देखिच जदि न देखिच देखि न जाकि काली आम स्क्विड गेम विषय कथा होते तो मुझे भाविली जे स्क्विड गेम्र जो फिलोसफी भितर पशिली स्क्विड गेम टाक लास्ट हाफ्रे कथा होती काली काफी भिडियोज बाकी इरेगुलारिटीज थिला जेहेतु फास्ट स्ट्रीम मुझे रेकर्ड करी स्ट्रीम तो होनी आमर ये प्री रेकर्ड हो बट पूरा लाइव हो मझे किसी कट पकाउनी भाई साहब मुझे जो प्री सॉरी पोस्ट प्रोडक्शन में बसिली जो एडिट करने एडिट किसी ना बेसिकली तादर से जो ट्रांजिशनटा मुझे खाली अप्लाई कर भिडियो प्रीवियस भिडियो तो एथरक भाई साहब मोर प्रबल इच्छा है इन जनरल मुझे जो एडिट बसे ना कट करे तादर गुड़ाए सीन्स आड करे पोस्ट प्रोडक्शन भाई पोस्ट प्रोडक्शन सीन्स अच्छी तो पॉइंट है भाई मोर प्रबल इच्छा है थर करने बट 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 से जगह मैं अटकी गली मुझे कहली ना भाई यहाँ है स्ट्रीम को स्ट्रीम भाया रखा भाई पज जो नहीं ना मझे मझे बुझिला फास्ट टाइम स्ट्रीम तादर गुड़ाए पज जे मन कर भाव पढ़ू कि जस्ट आन ऑब्जर्वेशन यही लेवल पज नहीं भाई मो दिमाग काम गलानी मुझे भाई मझे काटी कौन करी से पार्ट उड़ेदेवी मुझे जेहेतु शिखुची लर्निंग प्रोसेसटा हवा दरकार ये से जो मुझे काटाकाटी करली तो आजिर स्ट्रीम मु भाविली जेहेतु पॉप फिलोसफी रे पशिची पॉप फिलोसफी बेसिकली मैंने कौन आम कि गोटे पॉप कल्चर जिनस देखा जोटा कि कल्चराली काफी क्लासिक है क्लासिक मुवीज कहुए स्क्विड गेम भी क्लासिक ऑल्दो यहाँ गोटे वर्ष पुराणा बट क्लासिक तो मुझे एथरक नेली गोटे वन ऑफ द कैरेक्टर जोटा कि ऑल टाइम क्लासिक कैरेक्टर तक माना जाए जोटा कि रिटेन हिस्ट्री रे सिनेमा या फिर कॉमिक्स उठाओ वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर क्राफ्टेड इन द सिनेमा हिस्ट्री सी है मिस्टर जोकर तो तांको विषय तांको फिलोसफी तांको दर्शन आम आज टी कौन तो कहती पूरा पाखर टी गभीर भाव आम आलोचना आ पर्यालोचना करवा तो लेट्स जंप इनटू द स्ट्रीमिंग वर्ल्ड स्ट्रीमिंग तो चली ऑब्वियसली मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड ता पूर्वर आम गोटे म्यूजिक शुणा जो आम स्टार्ट हम बस এটা बेसिकली गोटे बैटमैन भिडियो एसे अच्छी से भिडियो एसर इंट्रो थिला माने से इंट्रो देइछि ऑब्वियसली एटा बैटमैन मूवी रो इंट्रो एनिमेटेड रो बट ए क्लास थिला से जो एठू मूड एटलिस्ट हमर बनिया स्टार्ट हो तो ठीक अच्छे हमर फर्स्ट तो मु भाभी तीनटा वीडियो देखिया भाई सेकंड वीडियोटा हम टिके स्किप कर दवा तीनटा वीडियो गोटे है तीनटा जोकर मुझे जोकर विषय तुमको कंटेक्स्ट दे दूँ तो बेसिकली जोकर 1920s रे जो बॉब केन क्रिएट करते कैरेक्टर आमर बैटमैन समस्ते परिचित थी लेजेंडरी कैरेक्टर वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर मुझे फाइनेस्ट वार्डटा ए वीडियो रे बहुत थर कह जाऊँगी बियर विथ दैट तो वन ऑफ द फाइनेस्ट कैरेक्टर लिखाई जोटा कि सुपर हिरो किंतु विथ नॉर्मल पावर किसी पावर नहीं था पाखे भाई आम भाया आम तम माने आम तम भाया गोटे मनीष बास भाई किसी साइंटिफिक गैजेट नहीं करी सुपर हिरो बनिया को ट्राए कर विथ हिज विल पावर इमेन्स विल पावर तार स्टोरी पढ़ो ना भाई तार कौन तो कहती बिगनिंग स्टोरी जो स्टार्ट है इनसेप्शन स्टोरी तापर तार भितर केमती कैरेक्टर इवल्व है से सब जिनस क्लासिक सब तो पॉइंट है जोकर रोल केमती बने तो से गोटे कैरेक्टर लिखा को स्टार्ट करती आंटागोनिस्ट तार बहुत आंटागोनिस्ट अच्छा जो मैंने सुपर पावर धारी काइंड ऑफ सुपर पावर जमती बेन हो गला ह्यूज बॉडी ह्यूज स्ट्रेंथ पेंगुइन हो गला पेटुआटा होकर बड़टा तो तार भी से टाइप रिडलर हो गला सी रिडल दिए से भी नॉर्मल टाइप बट स्टिल स्केयर क्रो सी भी सब्सटेंस पकई तुमको डराए तुम भयंकर फियर बट जोकर जोकर जो कैरेक्टर लिखाई ना से वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्टेड पुणी थे मुझे कही रखुची बिकज जोकर को जो से लिखिले ना भाई जोकर धीरे से मत लगुच
जना नहीं से स्टार्टिंग रे जब कहीं गोटे क्यारेक्टर किसी लिखे ना सी एत भाभी भी न था से कल्ट फॉलोइंग पाई एत लेजेंडारी जो एत ऊपर लेवल को पलैब एत साइकोलोजिकल कौन तो कहते दायरा खोलीदेव से भाविकी लिखि नथिले बट पॉइंट है जोकर क्यारेक्टर काफी केओटिक क्यारेक्टर सो आम धीरे धीरे एक्सप्लोर करिया जोकर क्यारेक्टर को तो पॉइंट है से तो जोकर जो से क्यारेक्टर लिखिले तापर से मूवी आडाप्टेसन से आसिया स्टार्ट है फर्स्ट टेलीविजन सीरीज घरियार आसूला कमिक्स रे तो आसी बहुत कमिक्स रे तो लिखाई चेटा देन टीवी सीरीज एनिमेटेड फॉर्म रे आसला देन मोशन पिक्चर्स को भी आसिया स्टार्ट है मेजर बॉल हॉलीवुड मोशन पिक्चर्स को तो 90s 1990 रे फर्स्ट जोकर को से माने आनथिले जाको 1989 या फिर 90 मोर मूवी ना मन पड़नी बैटमैन आई थिंक थिला से मूवी ना सेटाला से जैक निकलसन प्ले करते जोकर को सी गोटे एरार जोकर सेकेंड जोकर द लेजेंडरी फाइनेस्ट मोर फेवरेट जोकर 2008 मसीहार द डार्क नाइट रो जोकर थर्ड जोकर जोटा 2019 मसीहार वाक्विन फिनिक्स को द्वारा प्ले होता हीथ लीजर बाय द वे है आमर 2008 वाला जोकर आ वाक्विन फिनिक्स है 2019 वाला जोकर तो सहीटा है आउ गोटे जेनेरेसन तो तीन टा एरा भावी दियो तीन टा जेनेरेसन को मैंने रिप्रेजेंट करूछंती तार चिंताधारा ता पछरे सब किछि अछि तो से विषय में आज एक्सप्लोर करिया with this we can jump to the video. Over the last century, the Joker character has embedded himself in our culture, with multiple interpretations of him in comic books, television series, and of course, cinema. Since 1989, भाई मु एक्जाक्टली या कहली मु देखिनी माने एटा देखी जी ऑब्वियसली बट मु जाना नहीं यार मिस गला मुझे कहली एक्जाक्टली से यही there have been a total of 3 infamous performances of the Joker. Is it 3? यार आको तो गणी नहीं मु भूली जाइतली जस्टिस लीग रे भी गोटे थिला Yep, just 3 worth mentioning. But given the Joker is a dark reflection of our society, existing to hold a mirror up to our vulnerabilities, let's examine how each Joker performance defined its era, as the character will continue to adapt with us to a ए भिडियो रे भिडियो कॉन्टेक्स्ट दे दूची ए भिडियो रे ये बतई जे जोकर आम समाज रो गोटे प्रतिफलन समाज रो खराब जिनस रो गोटे प्रतिफलन बेसिकली विलेन आम जाऊ कहना हिरो आ गोटे विलेन ये विलेन रो प्रतिफलन विलेन को रिप्रेजेंट करूची जोकर लेट अस सपोज तो प्रति एरा रो खराब जिनस से हिसाब रे लिखा जाईची से टाइम रो जोकर allure our darkest impulses and exploit our biggest fears. The first difference between each era's Joker is their character's origin. In 1989, Jack was a criminal, the second in command in a mob gang. During the 1980s, large American cities like New York and Chicago's biggest problems were mobsters, drugs, and street crime. The 80s were also a time of financial aspiration, with Wall Street traders rising to power in high-rise buildings, with funky music, cocaine, and excess. तो बेसिकली से टाइम रे 90s कथा कहूँ यूएस रो बड़ा बड़ा जो सिटीज थे न्यूयॉर्क शिकागो एंड आई थिंक एलए भी थिला ऑफ कोर्स हॉलीवुड तो से टाइम रे कौन थिला कॉर्पोरेट एस्पियोनाज आउ ड्रग्स माफिया ये सब जिनसर हेविली इन्फ्लुएंस थिला Jack's character belongs right there. तो से टाइम रो जोकर कैरेक्टर बेसिकली ताकू प्रतिफलन करथिला से जगह रे बिलोंग करथिला But while the economy boomed for some, street crime was rampant, and there was a trust and expectation in the institutions to secure order. So if an enemy originated behind the walls of power in the high-rise buildings, this would lead to total anarchy, as the order stopping the chaos would have been corrupted by the chaos itself. And in a way, given the excess of yuppie culture at the time, there was almost no way of conceiving how a character like that could emerge if not from a position of affluence. As was common at the time, the mob were turning on one another, and Jack is betrayed by his boss, resulting in a confrontation with Batman, leading to Jack falling into a vat of chemicals. प्रति थर जोकर ओरिजिन अलग अलग तो कौ मूवी रे देखे जे से गोटे एमती केमिकली एक्सपोज्ड गोटे क्या कौन तो कहती ऑब्जेक्ट रे पड़िला बेसिकली किसी गोटे सब्सटेंस रे पड़िला केमिकली
कौन कहते केमिकल सब्सटेंस रे बेसिकली पड़ला ग्रीन कलर हो गला देन तापरे बेसिकली से टाइप तार ओरिजिन अच्छी जो कि बस ताको धोखा दे दिए बेसिकली सेमतिया सेटअप क्रिएट होती जो कि कौन कहते सी गोटे काली भाया पुणी पज ने तो बेसिकली सी गोटे सेमतिया सेटअप रू स्टार्ट हो जोठी कि इंस्टीट्यूशन गुड़ाक भी करप्ट हो इंस्टीट्यूशन एज इन जो गवर्नमेंट आउ ब्यूरोक्रेसी बेसिकली पुलिस गवर्नमेंट एम सब करप्ट होती तो बेसिकली से ता फॉल्ट रू क्रिएट होची सेटा से बताऊ. Whereas in 2008, the Joker's origin is a mystery. He's not a mobster, he's actually a disruptor to the mobster's market. This era was defined by its market disruptors, with companies like Facebook in 2004, Airbnb in 2008, and Uber following after it in 2009. The power of the individual was still fully believed in, as we were seeing individuals creating anarchy with new technology. 2008 वाला जो से एरा कहूँ बेसिकली एटा यूएस बेस्ड कहूँ आम से जिनटा को अल्प बहुत टी आगू फिल करचे लेट सपोज 1990 वाला जिनस को 2000 पाखापाखि फिल करचे 2008 वाला जिनस को 2014-15 पाखापाखि फिल करचे सो से टाइप भावी 2019 वाला जोटा आम येट से पहुँची ना आम येट टू बी रिच्ड आमर अच्छी पहुँचा आम से 2019 वाला जोटा से आसो जोटा आगू तो 2008 रे कौन होता से जो एरा जो देखी जोटा कि हिथ लेजर जोकर जोटा वन ऑफ द फाइनेस्ट से कौन है इंडिविजुअल पावर को गेन कले मोनोपोली वाला कौन तो कहती टेक्नोलोजीज वाला जड़े जड़े गोटाई गोटाई लोक किसी जन मृष्टिमेय लोक जो कहुए हाथ में संपूर्ण पृथ्वी परिचालित हो प्रैक्टिकल कथा तुम देख गणिदेव तो कंपनीज गूगल फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक अंडर मेटा अंडर सब जगह आसवे माने नेटफ्लिक्स होगला तापर आमर आमाजन होगला तापर टेस्ला होगला एमती किसी जन मृष्टिमेय कंपनी अच्छा जो मैंने $1 ट्रिलियन कंपनीज बिलियन मल्टी बिलियन $1 ट्रिलियन ये तो $2.7 ट्रिलियन एप्पल गूगल भी से भाया $1 ट्रिलियन कंपनी मान सब ह्यूज कंपनी सब ठीक अच्छे तो ये कंपनी मान हाथ में किसी जन इंडिविजुअल मैंने बेसिकली जो मैंने हठात पावर को रेज कले तो ये जोकर जो है ये से मॉबस्टर जो थे गैंगस्टर थे से एगेन्स्ट रही उठिला ये बुझेगा. Power was not delivered inside conference rooms anymore, it was simply taken, stripping the previous market leaders of their influence overnight. And in 2019, Arthur Fleck comes from nothing. This era no longer believes in the true power of the individual, as the previous era's disruptors are now in tight control of everything, with interlocking power structures between big tech, corporate interests, and politicians. Arthur is at the very bottom rung of power, living with his mother, broke, mentally unwell, a social pariah. His laugh isn't even a laugh, it's a disorder, a cry for help. बेसिकली 2019 वाला जो जोकर थिला सेटा काफ़ी सेल्फ गोटे इंडिविजुअल बेसिस रही गला तो गोटे इंडिविजुअल गोटे ये जो सिस्टम द्वारा केते अफेक्टेड होजी आउ नॉट ओनली सिस्टम सोसाइटी द्वारा भी तो तार कल्मिनेशन मिसेकरी सी ता एगेन्स्ट रे से जो तार रेज बाहर होजी बेसिकली तो तार कौन तो कहती से जो हस भी बेसिकली से देखो सेटा भी तार गोटे प्रॉब्लम अच्छे तार गोटे डिफेक्ट सेटा भी सी एमती मजारे हसुनी जमी एम हसुले एम हसर अलग रिजन थिला एमाने कहीं हसुले एमनकर प्रतिफलन कौन थिला कैरेक्टर प्रति आर अलग अच्छे तो मुझे कही ना 2019 वाला जो अच्छे मेंटल हेल्थ ये सब जिनस आम ये टू बी रिच्ड आम पहुँची नहीं चाहे आज एन इंडियन सोसाइटी. It's no longer a time of excess or fearing the unknown. We have now already experienced the financial consequences of that excess through economic crashes, as the rich got richer and the poor got poorer, creating... एटा तो हो जेबे माने आमे ए प्रोसेस रे अछि रिच गट रिचर तो हो सिवियरली रिच गट रिचर और पुअर गट पुअर एक्सट्रीम डिवीजन अछि दि जन भीतर सेटा लीड्स आउट टू बी या क्रिएट करबे एमती Arthur Fleck. Creating an atmosphere that lends itself to individual radicalization, resulting in us not fearing the unknown, but instead having to fear one another.
The appearance of Joker has also changed in each era. In 1989, Joker is portrayed in an expensive suit, like a successful 80s businessman. In 2008, the Joker's appearance is more like war paint. The smile embedded on his face is a scar, signifying that a smile or laughter is used to cover up a wound. And in 2019, Arthur Fleck puts on बेसिकली से कौन 1990s रे जो ये थिला जोकर थिला सी प्रॉपर सूट पिंधुला प्रॉपर पेंट होउतिला प्रॉपर तार अटायर थिला 2008 वाला जो थिला सी ता स्माइल बेसिकली भूलिगली कौन 80s smile embedded on his face is a scar, signifying that a smile or laughter is used to cover up a wound. हाँ बेसिकली तार क्षत को से निजे कौन तो कहती आज अ स्माइल से पोर्ट्रे करता ऑफकोर्स ता ऊपर स्टोरी काफी कही जे तुम डार्क नाइट देखी थी ऑब्वियसली तुम देखी स्पॉइलर अलर्ट मुझे बहुत लेट रे देली मुझे सब स्पॉइलर ही गपी ए जे स्पॉइलर रे पहुंचनी ए खाली फिलोसफी कहूँ बट आगू को स्पॉइलर भी आसो डार्क नाइट रे बेसी ऑब्वियसली तुम देखी से जो बसुच जोकर पे theory of Joker. And in 2019, Arthur Fleck puts on his clown makeup every day for work, signifying that we are all clowns for playing into the current system. That we are forced to play a role and put on a happy face despite the feeling of hopelessness underneath with such economic uncertainty of the future. The Joker's strategies are also definitive of each era. In 1989, the Joker plays a prank on the newscasters, then takes over with his own irreverent infomercial and inflicts chaos on the city by revealing there is poison hidden in some customers' products at home, turning the tables on the consumerist culture of the time. He then throws mountains of cash from his parade float to lure in victims to be poisoned, signifying our cultural worship of the rich is an easily exploited weakness, and these money-driven values will be the death of us. Greed is right. Greed works. तो बेसिकली से 1990s रे से थिला जे कंज्यूमरिज्म अगेंस्ट रे से थिला जे कंज्यूमरिज्म कंज्यूमर माने बहुत ही अधिक थिले तो गरीब लोक मैंने जो मैंने रहिले बेसिकली गरीब नो नॉर्मल वर्किंग क्लास जो मैंने रहिले से मैंने रिच मान को भगवान टाइप मानुले बेसिकली ता कहया कथा से टाइम रे से जो गैप बेसिकली सब बेले अच्छे तुम जेकोसी जेनेसन धरनी 2008 जेनेसन धर 1990 जेनेसन धर 2019 वाला तीन जो मूवी वाला जेनेसन सब से गैप अच्छी बट से टाइम रे कंज्यूमरिज्म जो लोक मान को इजिली बहले होता ता कहयार मीनिंग है इजिली कौन फसई होता. In fact, the character's downfall is due to his own excess, when he has a helicopter come to collect him and gets trapped. In 2008, the Joker is a terrorist who is willing to die for his cause, reflecting the dilemmas of a post-9/11 world. He hopes... Yeah, तांकर US रे गोटे सीन अछि post 9/11 pre 9/11 हला माने बेसिकली तांको देश रे गोटे बहुत बड़ जिंस घटितला तो 9/11 भाव US निजु को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्री भावे नु से अच्छी भी तो सेमतिया कंट्री निजु को तमे से टाइम रे किंग भाबुथियो तमे से तळे इनविंसिबल होतो निजु को बेसिकली से पॉइंट रे जे तमु को हटा दोडे कि आसियो तमर सबुडो इंपोर्टेंट बिल्डिंग को उड़े दो से टाइम रे इट्स लाइक तमे भी एक्सप्लोइटेड हे परियो लाइक तमे भी गोटे मिनिट मोर गोटे किछि पार्सल आछि सॉरी फॉर द इंटरप्शन बाय द वे कोथिले में अरे गोटे पार्सल आसथिला तो मणे जाइथिली मगे दिथिली सकाळो आसी पहुंचला ग्रोसरी not going there. Holds the city hostage and forces it to make decisions that reveal its true priorities, which in turn creates chaos and uncertainty, similar to how terror attacks forced the West to choose between its freedom and its security. Yes, तो basically जे कोन कहले ना 2008 वाला जेनरेशन जो जोकर थिला सी कोन कहला ना एमतिया कॉम्पैक्ट चॉइसेस तुमको देला जहाँद्वारा कि तुम डरिक आइदर तुम जो फ्रीडम थिला तुम निजको से इनविंसिबल भावुल तुम बेसिकली किंग थिल तो तुम भाविल तुम भी कहीं नुह तुमको भी ध्वंस कर किछि मिनिट रे तो से पॉइंट रे जोकर से जिनसा क्रिएट कला जे सेमतिया डिलेमा क्रिएट कला जे तुम सिक्यूरीटी को माने ये दबनी या फिर तुम किसी जिनस को एम्फासाइज दबनी माने निजु को बंचेवा
माने एते तमे भनरेबल हो जाइछ जे निजको बंचा भी को हद तक भी जाई परियो बेसिकली सेतरे से या देखैतला जे डार्क नाइट रे We've turned every cell phone in Gotham into a microphone. The Joker even records himself on his phone and uploads his threats, like Osama bin Laden. The powerful now fear the power of technology and how anyone can influence the masses. The violence is brutal. It's not like 1989's playful mockery of culture. 1999 रे वी आर लाइक आमे कल्चर को मॉक कर दवा कल्चर काइना से टाइम रे नुआ नुआ पावर गेन आस्थिला 2008 बेले आमे पावर जानी सरचे कोन इट्स लाइक नाउ आमे ध्वंस करिवा धुआं इट्स नॉट लाइक आमे गोटे कल्चर को मॉक कर दवा बुझि परछ तो आमे गोटे संस्कार ये कोन अछि आमे नुआ कूल मॉडर्न नॉट लाइक दैट एबे उड़ाओ धुआं करो 2008 It's about fire and explosives, killing crowds, destroying infrastructure, and the very foundation of our society all at once. The 2008 Joker stacks cash, not to lure in others or hold on to power, but to burn it, to show that money has no value in this war. It's not a war about money, but a spiritual war. In 2019, the violence is personal, it's intimate, it's not a distant explosion, it's a gun or a knife. It's about seeing the person right in front of you and depersonalizing them to an idea or a symbol of something else, and then extinguishing them, reflecting this era's political polarization. तो बेसिकली एबे इंडिविजुअल लेवल जो प्रॉब्लम्स अछि ना से प्रॉब्लम्स विषय कथा बा स्टार्ट हला एथरे से टिके अमेरिकन हिसाब रे दिछि बट मो हिसाब रे कहू जदी इंडिविजुअल लेवल रे तमर सब प्रॉब्लम क्रिएट हवा स्टार्ट हला तमे सेतो बेले सेतो तमे आज सोसाइटी को विलेन देखथलो तमे एबे निजे सेते ट्रैप्ड अछ ना तो तुमको आसपास ही विलेन देखा जा स्टार्ट हला इट्स लाइक दैट नॉट कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इज ट्रू बट not in this sense. Arthur Fleck is an insider look into the mind of a mass shooter, and the movie surprised audiences by creating empathy with his decisions. As instead of looking at the Joker as simply a bad guy, it causes us to reflect on the reality that every villain is a hero in their own mind. Of course, it's a nice point. से जो कहि ना सेता बेले प्रति विलेन को तमे जदी पचारियो तो तमे काहे के अनार्की करछो तांको लागे जे आमे ठीक करछु इट्स लाइक आमे भूल थोड़ ना करछु आमे आमो हिसाब रे हीरो होछु आमको समाज या करछि त मोर आतंकवादी थरे जई पचारियो जे तू काई उड़ी दिछु ऑब्वियसली से आडू छडू आंसर दियंती बट किछि जण थांती जो थरे कि माने लेजिट आंसर दियंती जे भाई मते इटा ठीक लागुला निजर बेसिकली विलेन मान को ह्यूमनाइज करा जाइछि इट्स लाइक दैट तो पॉइंट हला मु कोनी जे आतंकवादी उडा भल लुकड़ा भूल काम ऑब्वियसली करछन बट तांको पर्सपेक्टिव रे लाइक से माने हीरो सेम एज आर्थर फ्लेक जोकर ता पर्सपेक्टिव रे से हीरो. The final difference throughout each era is the Joker's relationship to Batman, and by extension, ourselves. In 1989, Jack sums up his relationship with Batman as You made me. Which is a legendary comparison of Gasio. Batman से तो relation केमती आसे. क्या ना Batman हला is like आम समाज रो भल्लो जिनिस. Batman हला hero ना obviously. तो से आम समाज रो गोटे भाबो जे आम समाज जोटा सेला बैटमैन लेट अस सपोज तो बैटमैन को से पचारु जे Jack sums up his relationship with Batman as You made me. जे तू बनैलु मते तो भाबो जे समाज रो खराब पार्टटा समाज को कहू जे तू मते बनैलु क्रिएट करछु. Which is very different to 2008. You complete me. 2008 वाला जो जोकर अछि सी ता कहिया हिसाब रे जे समाज रो ऑब्वियसली हमें जोकर को कंपेयर करू जे समाज रो खराब जिनस सहित तो समाज रो खराब जिनस एबे समाज को कहू जे तू मते कंप्लीट करछु तू मोर परिपूरक लाइक तू आ मो मिसिले गोटे सर्कल हो इट्स लाइक दैट आमे गोटे पजल रो दीटा पार्ट जोटा को जोड़ीले गोटे पीस क्रिएट हो. This shows a stark contrast between the philosophy between the two eras. In the 80s, the philosophy was that by keeping ourselves in check, we could avoid creating these types of villains. Evil was something that we believed could be prevented and defeated. Whereas in 2008, there's a more nihilistic view that the battle between good and evil is forever ongoing. There may be cause and effect, but the appetite for war is what completes both sides. And in 2019, the Joker creates moral ambiguity between the two positions. Basically, से कहला 2000
1990 मसीहार जो थिला जे मु क्रिएट भल समाज खराब जिनिस क्रिएट करछि सी चाहिए तू न क्रिएट करि परिबो इट्स लाइक तू प्रिवेंट करि परिबो तू जदि कंट्रोल रे रहबो चेक रे रहबो बट 2008 रे थिला मोर लाइकली दी जन भीतर गोटे युद्ध चलछि ऑनगोइंग युद्ध सेटा के बंद हो परिबोनी तो ताकू कंप्लीट से जिनिस सब चलो बेसिकली बुझिपार तो जेहेतु परिपूरक ये एक्जिस्ट कर माने ये एक्जिस्ट कर से प्लेन इट्स लाइक दैट कौन तो कहती ऑब्जेक्ट अच्छी माने तार शैडो पड़ो इट्स लाइक दैट से क्षेत्र में बट 2019 वाला As Arthur Fleck's character is only rewarded in our culture once he begins making more selfish and destructive decisions for what he believes are good reasons. So if 1989's philosophy was, "You made me," and 2008's philosophy was, "You complete me," 2019's philosophy is, "You are me." Tapping into the sense of powerlessness people feel in a world of division, with the line between good and evil becoming increasingly blurry. बेसिकली ता कहया कथा जे गोटे टाइम आसी जाए जो पॉइंट रे से माने 2019 वाला जोकर कहूँ यू आर मी बैटमैन को माने कहनी बट ता माने से आसी परसीव करूची से से काढ़ू जे ता माने हला 2019 मसीह जो जोकर आसी आम ए जेनरेशन वाला जोकर जोड़ा कहीं एबे एते इंडिविजुअलाइज आम हो आम समाज भितर आम एते दलित निष्पेषित फील करूँ से टाइम रे से जो भल और खराब वाला लाइन नहीं से लाइन धीरे धीरे माने लिभिବାକୁ ଲାଗିଲାଣି इट्स लाइक ब्लरिंग द लाइन्स बिटवीन लाइक बाउंड्री ब्लर होची तो से गुड और इविल मिसुचंदी तो जना पड़ुनी जे भल कोटा खराब कोटा तो समाज जो कह जाता समाज और समाज खराब जिनस समाज और समाज खराब जिनस भी गोटा ही इट्स लाइक वन आगुरी कौन 2008 वाला ये अच्छी माने ये एक्जिस्ट करिया चाहता 1990 ये चाहिए तैयारी कर परियो ये जब चेक रही तैयारी हम ही नहीं प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी. As people project their own desires onto the Joker's morally repulsive actions, reflecting our world of polarization and partisan media narratives. Each era, each Joker, and each performance shows us something about ourselves, the values we purport, the avenues to power we endorse, and the fear and anxiety bubbling underneath. The Joker will continue to grow with us because he is not the antithesis of our culture, but a reflection of it. बेसिकली वीडियोटा ये थिला तो एथरे से जोकर इनिशियल फिलोसफी थॉट्स एथरे किसी रखा जायनी बट एथरे कौन रखा जाय जे प्रति जोकर केमती तांको जेनरेशन सहित रिलेवेंट से माने किते तांकर कौन ता कहनी प्रेजेंस रहउची तांको प्रेजेंस माने कौन ता कहनी तांकर केते सिमिलारिटीज रहउची तांको जेनरेशन सहित या फिर आमे केमती ताको साहित्य हिसाब रे आमे जदी ताको धरिबा जे तांको जेनरेशन सहित तांकर समानता केते अछि. ठीक अछि, इट्स अ गुड वीडियो. एबे आमे जिबा नॉट दिस आमे भी जो एठी हाउ Heath Ledger redefined the Joker in the Dark Knight. हाँ बहुत आवाज आछी टोटा पानी नाइस. केमती लगुच आज बाकी पर्यंत स्ट्रीमटा जब भल लगुच खुशी को देख आहरी मजा आसुची प्रतिदिन मुझे एटलिस्ट ट्राए करी स्ट्रीम एथर करेंगे किसी किसी फिलोसफी या फिर किसी किसी जिनस आलोचना पर्यालोचना करवा या फिर बेले बेले आम रिएक्ट करना जे भाई आज किसी हूँ बैक टू जोकर थिंग हाउ Heath Ledger redefined the Joker in the Dark Knight. तो बेसिकली ये वीडियो लगे कारण है एथरे ए वीडियोटा टी आम स्किप कर देखिए कहीं एथरे से बेसी परफॉर्मेंस भीतर पशि परफॉर्मेंस द्वारा केते बेटर कर से कैरेक्टर को आम जानवे जे तो माइंडसेट केमती थी केमती क्रिएट होती देन तापर वीडियोटा सब मजादार अच्छे. जे जिनसा मुझे सब कह भूल जाए जस्ट एन ऑब्जर्वेशन जो चैनल रू देखिक यहाँ करुँची सब्सक्राइब कर दियो भाई मुझे सब्सक्राइब करनी तुम्हें भी करनी बहुत अवल क्लास रे वीडियो बनाए ऑब्वियसली वीडियो एसेज गुड़ा बहुत रिसर्च करके बनाए आम ताको अबिका भांगुचे मुझे तुमको बुझे इजिली कर ट्राए करुँची बट पॉइंट कौन ना ये सब जिन तुम शिखा ना तुम भावा जानीदेव भावा जानाटा सब इम्पोर्टाट गोटे जिन को देखा जाए केमती
If I asked you to name some of the most iconic performances of all time, you'd probably list off a bunch of names like Marlon Brando as Vito Corleone, James Gandolfini as Tony Soprano, Harrison Ford as Indiana Jones. But all एमाने केते जण मेमोरेबल क्यारेक्टर जो माने फिल्म या फिर टीवी सीरीज रे एक्टिंग करसंती किछि प्रोटैगनिस्ट हिसाब रे या फिर एंटागनिस्ट हिसाब रे जो माने कि चिर अमर क्यारेक्टर जाऊ पा जाय All of these performances were original. The audience had no expectations when they first saw it, nothing to compare it to. What's even more challenging is taking an iconic character that already has an iconic performance attached to it and daring to be great enough to redefine the audience's expectations. And at the age of just 27 at the time of filming, that's exactly what Heath Ledger decided to do. तो मु गुटे कहि रखुची ए कॉन्टेक्स्ट कोन तो बेसिकली एमती कैरेक्टर थांती जो माने बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर थांती फर्स्ट टाइम लिखा जेमते कैरेक्टर बट एमिति गोटे कैरेक्टर तुम भाव उठाओ तुम भाव जो महाभारत रे तुम गोटे अर्जुन या फिर कृष्ण को कैरेक्टर करो जेमती कृष्ण बीआर चोप्रा जो महाभारत थिला 1980s 90s रो से टाइम रे जे हेतिले अर्जुन हेतिले ताका ना तो अर्जुन है बट जे कृष्ण हेतिले कौन ताका ना नीतीश भारद्वाज आई थिंक यस वन ऑफ द फाइनेस्ट कृष्ण जे पोर्ट्रे करछन्ती भाई साहब से ताको स्माइल ताको डायलॉग डिलीवरी से पूरा कैरेक्टर रे एम्बॉडी हे जितिले जे से ही से कैरेक्टर तमे कृष्ण मान ताको ही भाबियो जेमती रामानंद सागर कर रामायण रे तमे अरुण गोविल को देखो सी रामचंद्र भाई एनी टाइम ठीक है इट्स लाइक दैट तो सही भाया से कैरेक्टर को टॉप करिया बहुत कष्ट कहीं गोटे ऑडियंस मन रही जे रामचंद्र माने अरुण गोविल तमे आ काहा को भी राम बनी दियो मनुष्य देखिबनी मनुष्य ठीक है डायरेक्ट कंपैरिजन तांको सहित होइजो तो सही भाया कथा एक हीथ लेजर परफॉर्मेंस एते लेजेंडरी फेनोमेनल काई हे गेला कहीं 27 वर्ष टाइम रे से स्टार्ट कले डार्क नाइट रे से एक्ट कले 27 वर्ष हेता तांको सेता आ से कैरेक्टर 1990 मसीह जिंदा पूर्व वीडियो रे देखले जैक निकलसन प्ले कर सकते ऑलरेडी तो सी से टाइम रे कल्ट क्लासिक बनै सकते से कैरेक्टर जोकर निजे से कैरेक्टर जो से कैरेक्टर भी लिखाई कॉमिक्स रे बहुत टाइम हैला सी भी गोटे कल्ट क्लासिक कैरेक्टर तो से कैरेक्टर को आउ जने प्ले करी पॉपुलर हो जाए से कैरेक्टर को तुम आउ थे प्ले कर आ संगे बहुत लोग क्रिटिसाइज कले जे हाँ ये किए कल का लौंडा क्या ही कर लेगा ए टाइप मोमेंट बट हीथ लेजर कहले ना बाबा अपन करेगा और अपन टोटल रीडिफाइन करेगा उसके बाद पूरा दुनिया याद रखेगा कि अपन का किए थे तापर भाई अमर गले ठीक है हमें से विषय देखिए with the Joker. When Christopher Nolan put out a casting call for the Dark Knight's villain, a lot of actors shied away from the opportunity, knowing that the character had already been defined by Jack Nicholson in cinema, Mark Hamill in animation, and Cesar Romero in television. ये समस्त भीतर पॉपुलर जैक निकलसन थे मार्क हैमिल कर वॉइस एक्टर थे से जेतो एथिरे मैक हैमिल जे कि स्टार वार्स रे लीक बन थे Before seeing Batman Begins, Ledger had expressed disinterest in the genre, but after seeing the realistic world Nolan had built, Heath was actually the one to pursue him this time, feeling he had something to contribute. So I knew it was open for a fresh interpretation, and I also instantly kind of had something up my sleeve. At this point in his career, Ledger was a respected actor, but more of a pretty boy, a romantic figure. He shook things up by playing the emotionally repressed Ennis in Brokeback Mountain, which earned him his first ever Oscar nomination. But as impressive as that performance was, when word got out that Heath Ledger was going to be playing the Joker, it didn't quite add up. It felt like it could be a potential disaster in the making, but he and director लोक माने विश्वास कलेनी जे भाई एते भलो जिंस हबो बिली ये साउंड कोट असला टाण अच्छा अबे किथा आसुला हाँ कोड थिले मु अरे मा को साइलेंट करने की हाँ तो जोकर बेसिकली से कैरेक्टर को बेसिकली प्ले करे को चाहू नथले जेतो क्रिस्टोफर नोलान गोटे नुवा इंटरप्रिटेशन से डार्क नाइट बेसिकली तुम जो डार्क नाइट देखियो डार्क नाइट कौन सी कॉमिक बुक रु बहुत कम निया जाई बट ये स्टोरी को बहुत रिवैम्प कर निज हिसाब से बहुत तोड़ मरोड़ के बनाए हैं और लेजेंडरी बना दिया है भाई डार्क नाइट टिल डेट 2022 रे मु वीडियो फिल्म करूची आज पर्यंत द ग्रेटेस्ट नॉट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमिक बुक फिल्म एवर. Director Christopher Nolan seemed to share the same vision for the character. We saw
absolutely eye to eye on the bigger picture idea. These ideas were focused on key influences, like Alex DeLarge from A Clockwork Orange, someone with a unique style who brings a sense of playfulness to violence, and the artwork of Francis Bacon, bringing a haunting grittiness to the notion of a face. Ledger was hands-on in every aspect of the character, choosing the right shoes, knives, and colour coordination for the outfit, even studying how ventriloquist dummies laugh, as he always found them particularly terrifying. Little details mattered a lot to him, like wanting to be the one to put on his own makeup, as realistically that's what the character would have to do, which made him a lot rougher with face paint. बेसिकली से तरह से कहूँ जे सी क्यारेक्टर को एते नुआंस्ड निकला नुआंस माने हम जतले बहुत माइन्यूट जिंस को लक्ष्य करो तो ता दरे कौन कला ना से क्यारेक्टर रे खिलिया स्टार्ट कला बेसिकली प्रॉपर तार मेकअप ठू आरंभ करके तार अटायर पर्यंत सब जिंस रे से नेट पिकिंग करिया स्टार्ट कला आधर कलर कोडेड प्रॉपर जिंस होइतिया दरकार ड्रेस गुड़ाक पेंटिंग निज हाथ में कला सो दैट से रफ लगे जमी लगे कि गोटे बनईनी जमी कह जाए ना कि मनकर आम सीरियल्स देखुचु सीरियल्स घर भितर ऑब्वियसली लेडीज मैंने अच्छा प्रॉपरली तुम केमती मेकअप नहीं से आम गोटे क्वेश्चन करूँ एमती तू लिपस्टिक लगे थोड़ा रात शुआ जाऊँ पॉइंट है एत प्रॉपर तो नुह ना तो सहीटा फेक लगे ये से जिन को पूरा रियलिटी आनला निजे मेकअप लगेगा जब जोकर होता निजे लगे था केमती होता से टाइप आहरी नुआंस गला कौन क्यारेक्टर को पढ़िया स्टार्ट कला जिते सब आंटागोनिस्ट क्यारेक्टर अच्छे तो क्लॉक वाइज ऑरेंज गोटे अच्छी मूवी 1960s टाइम 60-70 भितर स्टैनली क्यूब्रिक द्वारा ताधरे भी आंटागोनिस्ट मन को पढ़िया स्टार्ट कला तो ये बढ़िया आउ पेंटिंग्स रु उठेला under his fingernails. He locked himself away for a full month, totally isolated. अकोंदी इंस्पिरेशन ड्रा करियो इट्स नॉट लाइक चोरी इंस्पिरेशन ड्रा करिया स्टार्ट कला एते ड्र कला जे गोटे जिनस को तुम एते भल से करिया स्टार्ट कर ना ऑब्वियसली आम जहाँ भी मनीष जहाँ भी करूँ जहाँ भी बनाऊँ सब जिन काइंड ऑफ चोरी या फिर इंस्पिरेशन था कहीं किसी जिन ओरिजिनल नुह तुम किसी जिन देखुच तुम से हिसाब से भावुच तो सी से जिन को नहीं एते एक्सट्रीम को पड़ेगा ना सी गोटे नुआ ओरिजिनालिटी क्रिएट कर To fully immerse himself in the role, keeping a diary in which he wrote out his lines of dialogue again and again, and kept these picking a diary. एटा तारा ओरिजिनल नोटबुक द जोकर भाई साहब चिरी के लेके अलगा प्रकार पे स्टाइल एटी जे थुआ एटा द ऑस्कर ए येलो कलर ना जीती थिले which he wrote out his lines of dialogue again and again, and kept these pictorial scraps that would later inspire his performance. So let's examine Heath Ledger's performance as the Joker. तो से गोटे रूम रे निजु गोटे मास जाय बंद कर रखले डायरी मेंटेन करथले से डायरी रे एक्जेक्टली डायलॉग गुडा रिपीटेटिवली लेखि चलले तादर रे चित्र लगै छथि इंस्पिरेशन पई जे को बढिया परफॉर्मेंस हवा दरकार ब्यूटीफुल आठु बेसिक क्राफ्ट रे आउ भितरु पसियो हम जानने up close and see how these influences manifested on screen to create something we simply never saw coming. Let's start with the physicality of the character. The opening sequence introduces a series of bank robbers wearing clown masks, but despite all of them wearing the same outfit, Heath makes his character immediately identifiable with his body language. Basically, this is गोटे character केमती निजु का आहुरी nuance कर चलला तो समस्त बैंक रबर थे समस्त मुखा पिंधले बट सी निज क्यारेक्टर टिके अलग रखुला निज फ्लुइडली मूव करूला एगुड़ा सब आगु से कहबा एटा टिके आमे पार्ट टाइम काट परिया तो बेसिकली ता कहिवा स्टाइलटा सी गोटे जगह इंस्पिरेशन नैथिला 1979 रो गोटे डॉन लेन शो Performance has famously been compared to this Tom Waits interview, as they share the same loose, fluid physicality and even Let me get comfortable here. Okay. Evening. Commissioner. I got here last night. I was on the plane from Paris for about 22 hours. Their code. It's a bad joke. Dropped at the first sign of trouble. It's a sort of intangible, captivating energy, someone neither bothered nor bound by. It's not a bad thing. माने तमे गोटे कोठू इंस्पिरेशन तो ऑब्वियसली रियल लाइफ रो तमे नबना जेमति नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी कहंती सी आगुरु जितेबाला सी मैंने स्ट्रगल करते से बहुत लोकों सहित मिसुले तो तांकठू से ट्रेट नौले से कहूँ केमी कथा कह ढंगी केमी तार चालीचलन केमी से पूरा समाज रू जिनस उठाऊले तो से जहाँ शिखुले से जिन को से क्राफ्ट रे यूज करते तो सही है जिन ये से भाया से इंटरव्यू देखी सेमती लूज फ्लुइड केमती जन कथा हो पार्टी ताठू के 2008 बनता से
इंटरव्यू 30 वर्ष पुराना इंटरव्यू by others' expectations of them, and every little gesture communicates that you're dealing with something different. It makes you wonder, is this person out of place or standing out? बेसिकली निजुको अनप्रेडिक्टेबल बनाउँथला When you read Nolan's script, it's very bare bones and instructional. The character goes here and does this, which is how a lot of scripts are written. But the magic of what Ledger creates is clearly absent. And look, obviously the director Christopher Nolan had details of the character evolved by working together, as in the end, it's the idiosyncrasies that Ledger brought to तो बेसिकली शिक्षा कहूँ जे क्यारेक्टर जो था ने तो बेसिकली गोटे सीन को ना स्क्रीन प्ले लिखाई था सही अकॉर्डिंगली मूवी बने प्राय प्राय तादरे डायरेक्टर किसी चेंज करता या फिर एक्टर बड़े बड़े किसी चेंज कर दियंती बट इन जनरल सही अदारे ही मूवी बने सो द थिंग इज ठीक है ब्राइटनेस बढ़ेगा तो द थिंग इज जोकर जो क्यारेक्टर था हीथ लेजर जो प्ले करते जोकर को तो हीथ लेजर से काफ़ी नुआंसेस आणुले सिंपल जिनस लिखाई दियो गोटे एग्जांपल हो कैसे प्ले करियो देखिबा In that brief moment, he's eyeing his diary. There was a picture of a laughing sound. एटा बेसिकली से जो तर चाहानी जोटा ये देखेला To continue talking. ये चाहानीटा In एटा से हायना ता पिक्चर रु इंस्पायर Ledger's diary, there was a picture of a laughing sound as they attack their prey, making them come across as तो बेसिकली हायना देखु जे केमती तो हायना जेतले अटैक करे ना तर शिकार ऊपर हायना गोटे ग्रुप थांती हायना ग्रुप तो से माने जेतले अटैक करंती सिंह को भी अटैक करंती कुछ फरक पड़े if they are really relishing in the act of अटैक कला बेले जो साउंड काढंती ना violence. And that same maniacal laughter explodes out of Ledger even when he's under attack. This तो एठी हसर अलगा मीनिंग थिला जेंते हम पूर्व मूवी रे देखथि 2019 वाला जो जोकर थिला तार हस डिजीज हेला इट्स लाइक तादर किसी कारण नथिला हसिबार तादरे सेटा गोटे डिजीज आसला बट इथरे गोटे कारण अछि हसिबार कहिना से इट्स लाइक से अटैक कर जेबे ता स्टाइल सेटा This is where the influence of Alex DeLarge from A Clockwork Orange comes in, as they traumatize. While most actors maintain interspersing moments of eye contact, how little he values the life he's तो बेसिकली से या कहू जे केते से डिरेल होतला कैरेक्टर जहा लिखाई जी मन कर तमे जण से तो देखी कथा हो जण जतल डरे कुछ तो या फिर नॉर्मल कहि जी भाई तू काई आसेनु ये आडू सडू कहि जी आसिनु नॉट लाइक दिस or inside the corners. He's interspersing moments of eye contact, then looking around the room or inside the corners of his mind, communicating how little he values the life he's toying with. This inability तो से कमी माने सेतरे से देखो जे सी के ताको किछ फरक पडुनी ताको गोटे जिंस खाली प्रूव करियार अछि से जिंसटा हम आगु देखिया कोन ताको प्रूव करिया and his rattling, it's all about the night, contributes a totally new texture to the piece. Police officers applaud, and despite it not being, there are layers. The more is chaotic energy to the scene, picking up on Trug's fundraiser for Harvey. The stare is predatory. When he interrupts Bruce Wayne's fundraiser for Harvey Dent, the script simply says, the Joker moves through the terrified guests, smiling, but Heath adds a chaotic energy to the scene. एथरे या लिखाई दिला जे जोकर गेस्ट मानन देगिरी क्रॉस करिवो हसी हसी बस Picking up entrees किछ जिंस उठेला खाउची and eating them and swigging from champagne काटू शैंपेन छडी पी दउ जोडा जो लिखाई नथला से गुडा ऐड करजी आज कैरेक्टर नुआंस glasses. His indulgence, his greed, his is in silence. The Joker drops the gentleman, turns to Rachel. The Joker says, "Hello, beautiful," and continues the monologue. तो बेसिकली कोन हला ना लिखाई दिला स्क्रिप्ट रे जे जोकर कोन करियो ना गोटे लोक को जाको ट्राई करथो मारिया पे ताको छाड़ दो से टाइम रे रेचल किछ कहिथियो जे तू को कोन दिया होउछु बेसिकली ए बेला किछ कहिथियो जोकर आई डोंट नो कोन कहिछि रेचल एग्जैक्टली मन माने जे रेचल दाउ डाकिला जे निज अडगु जे भाई तू ठीक लोक पाखो बेसिकली तो जोकर से तळ हेलो ब्यूटीफुल कहि कि ता पागडु मुडे बस एतकी लिखाई But Heath adds this playful parting of the hair while also licking his lips, preparing to feast, and then stalks her around, trying to get her to look at him face to face. When he approaches back, छुट्टी उठेवा तंते करी कि जीवा बेसिकली शिकार भगु तो जाउ तोर तो कोन त गन्दी भाव भंगी सेमती आ ता पाखु जा गला पर भी
शिकार सहित जेमती बुली बुली तापर ता मुह पाखु जे छुरी लगाउछु Batman after the truck chase. The script throws स्क्रिप्ट रे से लिखाइ देला जे बैटमैन ए जो ट्रक चेज रे जतले बैटमैन आसी गली पड़े says the first thug pulls out the mask. मास्क उठाए लिखाइ जे मास्क उठाए से कोन ता कोन तार जे टट्टू के आउट थाए ता अंडर जो उनसु काम करन जे मास्क उठाए ताको शॉक लागे से गली पड़े तापर ये जाईगिरी कोन ता कोन जोकर केवल हसे आ किछि नै An electrical shock from the batsuit throws him back. The Joker laughs. That's it. भाई हसी की ता ऊपर डिया नहीं करे कैरेक्टर ऐड But firstly, notice how Heath adds this little waltz hop as he approaches. Electrocuted, he doesn't just laugh, he stomps on him, laughs maniacally, and spits on him. छापा पकाए डिए तापर छापा Without these little extra details, बेसिकली ए डिटेल बिना ए कैरेक्टर इतने मेमोरेबल ही पाना था लगे सिंपल यदि हाँ दी दाना ये सब हल्का हल्का नुआंसेस मिसेगी ना इट्स लाइक बिंदु बिंदु मिसेगी सिंधु होइछ costume, but not embodying the character fully. The hostage, how the own breathes, बेसिकली ए जो अछि सिंटा एटा जानि त मैक्सिमम तमे से जो गोटे देखाय सिंटा and the ए भिडियोटा से निजे डायरेक्ट करछि एथरे नोलान डायरेक्ट करनि से निजे ताको नोलान कहे तू डायरेक्ट कर एटा तो तादर बेसिकली लिखाय था जे गोटे लोक थो ताको से धमकाय जे तू कहि दे जे बैटमैन की ए टाइप रो किछ गोटे टेल मी योर नेम तार ना पचारे आ ताको पचारे तू रियल बैटमैन से ऑब्वियसली कहे ना तो ताको मार दे बेसिकली ठीक है से सीन तो से सीन सिंपल लिखाय दे जे गोटे नॉर्मल एमती लाइटेड गोटे फ्लोरोसेंट लाइटेड रूम ठीक है गोटे बार लाइट लगी सेमती रूम किंतु सेथरे से गोटे स्लॉटर हाउस को नहीं जाए जोठी मांस गोटा जगह से टंगा ही सो मांस गुड़ाक से आड कर टेक्सचर बनाऊँ तो बेसिकली ए आउ जे सी गोटे कैरेक्टर केते एनरिच कर बट ठीक है आई थिंक ये वीडियो पे एटा परफेक्ट है हां ए गुडा सो देखेबो as he orders him to just one it's such an engrossing and pure performance because the character isn't it's all improvised improvise करछि मास्क डांसिंग एटल improvise करछि मॉकिंग एक्टिंग एट improvise करछि फिजिकल कांटेक्ट and directed by इसो काफी इसो ग्रीन लाइन गुडा सो स्क्रिप्ट भीतर से पूरा improvise करछि से improvise सीन गुडा ही आर्ट करछन कैरेक्टर It's such an engrossing and pure performance because the character isn't simply defined by the beliefs that motivate his actions, but how he physically embodies that philosophy. He truly is chaos in how he thinks, how he moves, and how he speaks, an unstoppable force of nature warping the world into his image. And by playing this famous comic book character so vividly, with every idiosyncrasy persistently blossoming on screen, Heath Ledger transformed the Joker, not just into a plot point, a costume, or a laugh, but a state of mind. A feeling that lingers within each audience member for long after viewing. Of course. Legend character. तो से character केंदी build करछि. Next time देखियो final video. The Dark Knight creating the ultimate antagonist. जे इतने legendary antagonist या फिर villain तमे create ही केंदी कर लेखा ही केंदी जाए ता पछर thought process कोन ता पछर psychology कोन सेटा ऊपर हमें भी आलोचना करिबा सेथे जोकर काफी क्लियर जाना पड़िबो एटा बेसिकली बेस्ड ऑन डार्क नाइट. Hi, I'm Michael. This is Lessons from the Screenplay. एटा आउट चैनल आ कोई सब्सक्राइब करनो ऑब्वियसली आ कोई मूवी सब्सक्राइब करछि लेसन्स फ्रॉम द स्क्रीन प्ले बहुत ही अवल बट आठो बेटर नो एथरे कोन तमको जदी स्क्रीन प्ले ऊपर टिके सिखियार इच्छा अछि बट तमे स्क्रीन प्ले हाँ आधर स्क्रीन प्ले ही बेसी सिखाए छे तो सेति पे आधर फिलोसफी ऊपर सेते नाही चिंताधारा पे से कंदा कोंदी ऑब्जर्वेशन वाला जो चैनल था सेटा बहुत भलो था. When I think about why The Dark Knight works so well, the answer always seems clear. The Joker. Good evening, ladies and gentlemen. There have been psychopathic villains before, other antagonists with elaborate twisting plans, but there's something special about the Joker. But putting the Joker character into a movie clearly does not automatically make it great. से कहला जे पूर्वरु बहुत मूवी अछंती जोतरे एमतिया लेजेंडरी कैरेक्टर सब प्ले हिचंती जोतरे साइकोपैथ विलेन थांती बट ता माने नो जे सेटा सेमतिया मूवी पॉपुलर अछि अछंती पॉपुलर
बट ता बिली नुह जे तुम जोकर क्यारेक्टर जदि एते भल से लिखाई ताने से जोकर क्यारेक्टर जो कौन मुवी पूरे दब से मुवी लेजेंड हो जमती ये हगी जस्टिस लीग रे भाई साहब सुइसाइड स्क्वाड रे. So, what's special about the Joker in The Dark Knight? Is it just Heath Ledger's excellent performance? Yeah. Or is there something more going on? Today, I want to investigate this, to examine the function of an antagonist in a story, and break down why the Joker is the perfect opponent for The Dark Knight. Exceptionally good at attacking the hero's greatest weakness. Let's begin with a quote from Robert McKee's story. A protagonist and his story can only be as intellectually fascinating and emotionally compelling as the forces of antagonism make them. So an antagonist must be powerful. The more powerful, the harder the struggle for a hero. बेसिकली से कहूँ हीरो सब मेन प्रोब्लेम है हवा कथा तो स्टोरी से तले ही से आगू बेसिकली जीव जितेबाला And emotionally compelling as the forces of antagonism make them. हाँ तो बेसिकली से एंटागोनिस्ट जिते अधिक टाणिबो स्टोरी को जिते फॉरवर्ड टाणिबो जिते कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो बेसिकली सेते स्टोरी आगू जीव प्रोटैगनिस्ट सेते आर्क रे उन्नति घटिबो. So an antagonist must be कारण प्रोब्लेम जिते बड़ हो ताकू सेते सॉल्व करिवो तमे आ ता द्वारा कोन ता कोंती सॉल्यूशन जिते आगू जीव स्टोरी सेते आगू जीव स्टोरी सेते एनरिच हो. Powerful. The more powerful, the harder the struggle for a hero. And the harder the struggle, the more compelling the story. Yeah, तो बेसिकली जिते तमे एंटागोनिस्ट जिते पावरफुल हो ता प्रॉब्लम से अधिक हो प्रॉब्लम जिते अधिक हो स्टोरी से कंपेलिंग हो स्टोरी से मजादार हो देखिया पे. But that's a little vague. What does powerful mean in this context? John Truby has a good piece of advice about how to make the antagonist powerful in a specific way. Create an opponent who is exceptionally good at attacking your hero's greatest weakness. The Joker is exceptionally good at attacking Batman's greatest weaknesses. Much of Batman's power comes from his ability to intimidate, from his physical strength. And the Joker delights in creating situations that nullify Batman's strength, like when he's captured Rachel and Harvey Dent. Where are they? You have nothing to threaten me with. Nothing to do with all your strength. The Joker turns Batman's strength into a weakness. He can do this because he doesn't fear death. In fact, he wants Batman to kill him. बेसिकली से ऐसे कहूँ जे बैटमैन रो स्ट्रेंथ कौन जैसे सुपर स्ट्रेंथ से किसी भी कर पारियो से मारी पारियो ये कर पारियो ये कहला जे बाबा मते मरर ही डर नहीं एमतिया पेन पॉइंट्स हो धरला ना जोठी की बैटमैन रो शक्ति काम दबानी से जगह रे सेमतिया पेन पॉइंट्स हो धरला. Come on, I want you to do it, come on, hit me. Because he knows Batman's morality takes the form of one rule. He doesn't kill people. So the more chaos the Joker causes, and the more people he kills, the further he reveals that Batman's moral code can also be a weakness. Because the only way to truly stop the Joker is to kill him. तार पॉइंट थिला जे जोकर रो पॉइंट कोन थिला जे बैटमैन के में मारी नहीं खाओ तो सी कोन गला ना ता फायदा उठेला से कहला अच्छा तू मारो नु देखिया तते मु एते हरण कर दियो तू मारियो बाध्य हो जु ताकू केवल जिंस प्रूव करे जे बैटमैन बिन आम तम बढिया गोटे मनिस सी भी भूल करि पारियो ता मोरल को मते डाउन करिया छ किछि नै भाई मो गेम ही छै आगु को चला देखियो ता पूरा मूवी रे भी बेसिकली से आइ छै देखि छी बट बैटमैन रो जेहेतु उसूल अछि से उसूल विरुद्ध रे से जाउ ही नै आकु गोटे जिंस कहले प्रूव करे छी त मरिया को भी रेडी अछि मते बाडे दे तू मार दे किंतु ता द्वारा तू गोटे तू भी मो बळे आइ छु जिंस जानियो त काहे कि से ता बळे आइ Something Batman can never do. But the Joker's plan isn't just to beat Batman. It's to show Gotham his true colors. He does this by pressuring the protagonist into difficult choices. According to Robert McKee, true character is revealed in the choices a human being makes under pressure. The greater the pressure, the deeper the revelation, the truer the choice to the character's essential nature. तो बेसिकली एटा गोटे लेजेंडरी लाइन टा भाई ट्रू कैरेक्टर तमर एटा बेसिकली कहा ऊपर प्रचलित एटा केवल बैटमैन नो एथर से कोन कहि जे जोकर बैटमैन रो सबुटू एमते जगह रे फसाय ताकू ना एमते जगह रे ताकू एमते चॉइसेस ताकू जे जगह से तार पूरा
निचोड़ दिए पूरा चुपुड़ी दिए भाई तू कौन तोर ओरिजिनल सेल्फ बाहर जाए जमती ठीक अच्छे तो ये जगह जोकर कौन करता ट्रू कैरेक्टर इज रिवेल्ड बेसिकली यहाँ जोकर भी नुह समस्त नॉर्मल निज मनीष देह भी लगे पारे तुम ट्रू कैरेक्टर से बाहर जब तुमको एमती अंडर प्रेसर चॉइस गोटे दि जाए भयंकर प्रेसर गोटे चॉइस दि से प्रेसर जिते अधिक हम ठीक अच्छे तुम निजर सत्य से अधिक बाहर बाहर को आउ से क्यारेक्टर ओरिजिनल जहाँ कहते चरित्र से चित्रण हो बाहर ओरिजिनाली तुम भयंकर प्रेसर तुम कौन स्टेप्स नौ सेटा ही तुम ट्रूली तुम कौन ताकू प्रतिफलित करे So in every story, the forces of antagonism must increasingly apply pressure to the protagonist, forcing them to make more सब स्टोरी रो बेसिकली and more difficult choices. जे तुम विलेन हीरो को पूरा प्रेशर रे पकाइयो ट्राई करे जोठी चॉइस न ठीक अछि तो जोठी बेसी जत्ते बेसी प्रेशर सेते बेसी स्टोरी कंपेल हो Choices which reveal their true nature. As far as pressuring the protagonist into choices that test and reveal character, that is quite literally the Joker's plan. Jesus. After 45 pages of pretty boring setup, on page 46 the screenplay kicks into gear when Batman is faced with the first in a series of conundrums. You want order in Gotham. Batman must take off his mask and turn himself in. Oh, and every day he doesn't, people will die. By refusing, at first, to give in to the terrorist demand, we the audience see that Batman has what it takes to do what's right. But the Joker proves to be unstoppable, always one step ahead of Batman, in a sequence that I realized is very similar to another movie with a great antagonist, Seven. Batman and Gordon investigating a crime scene, discovering fingerprints that lead them to the apartment of the suspect, only to find that it's all part of the antagonist's game. Even the Joker's plan to be purposefully caught is similar to Seven. Throughout all this, the pressure on Batman increases as people keep dying. The people of Gotham turn against Batman, until finally the pressure is too much and Batman's true character is revealed. Today I found out what Batman can't do. He can't endure this. Batman decides to turn himself in. Harvey Dent claiming to be Batman and तारो एटा ही बेसिक लक्ष्य था जैसे बैटमैन कोई भांगी दवा इतने भांगी दवा जैसे हारी जो लास्ट taking his place is the only thing that stops him from doing so. तो एट ही डिफरेंशिएशन क्रिएट है जो बैटमैन से निजे आस्था है निजे को धरा दे दवा पे बैटमैन जी ब्रूस वेन बेसिकली बट हार्वी डेंट कह दीजिए ना मु बैटमैन एट ही डिफरेंस क्रिएट है जो भाई कुछ भूलभाल हो छी The most revealing choice Batman makes is when the Joker एटा तो वन ऑफ द फाइनेस्ट सीन लेखा है जो कैरेक्टर चॉइस हिसाब से वन ऑफ द फाइनेस्ट में कोई pressures him to choose between Harvey Dent and Rachel. Which one you going after? Rachel! And ये कहे जे भाई रेचल पाकू जी रियल रे ठीक है ये रियल रे रेचल पाकू ही जाता है बट जोकर आहुरी गोटे स्टेप आगे से बाबा भूल एड्रेस देता है हार्वी डेंट एड्रेस रेचल एड्रेस हार्वी डेंट हिसाब से दे देता है और हार्वी डेंट एड्रेस रेचल पे दे देता है तो ये जो रेचल चूज कर एक्चुअली पहुंचे हार्वी डेंट पाके choosing Rachel, Batman reveals what he's unwilling to sacrifice. तो यही जगह बैटमैन चूज कर मैंने देखे ही दिए जे भाई सी बहुत हद तक जाई परियो निजे मरी जाई परियो सिटी पे बट यहाँ पे भाई पिघल गया For the greater good of Gotham, the limit to his resolve. But with the Joker, things are never that simple. Throughout the film, the Joker forces Batman into choices that reveal who and what he cares about when the pressure is really on. Batman is forced to face his true self. Let's look at our final point. Competing for the same goal as the protagonist. How do you make sure your antagonist is the right one for your hero? After all, the Joker may be the right antagonist for Batman, but completely inappropriate for a different protagonist. Let's go back to John Truby. It is only by competing for the same goal that the hero and the opponent are forced to come into direct conflict, and to do so again and again throughout the story. This concept helps distinguish your antagonist and make sure they are the right one for your hero. So how are Batman and the Joker competing for the same goal? तो बेसिकली दी जनकर हीरो विलेन दी जनकर लक्ष्य गोटे जिंस पाया रहबा दरकार Both of them have their own vision of what they want Gotham City to be. Batman is fighting for hope, for Gotham City without crime,
for law and order. And the Joker Upset the established order, and everything becomes chaos. Batman versus the Joker, law and order versus chaos. In their final scene together, the Joker even has a line that makes it very clear he knows what their battle is all about. You didn't think I'd risk losing the battle for Gotham's soul in a fistfight with you. They are both competing for the soul of Gotham, and only one of them can win. I want to take a moment to underline this point further, because it shows that a relatively measured but specific threat can be extremely compelling. In the finale, the only lives in danger are a few hundred people on the ferries. Batman is not racing against time to stop the villain's random सिंपल भाई एथरे से कही जे सी गोटे एमते तार बेसिकली लक्ष्य थिला जे गथम सिटी रे तू जोटा को तू किछ ठीक कर ता बेसिक थॉट प्रोसेस थिला जे बैटमैन चाहुथिला जे गथम सिटी गोटे होप आनिबो बदलाव आनिबो भलो जिंस आनिबो यो कहला कि भलो माने नुहो भाई एमन तो गोटे पुतला हिसाब यूज करछन काना आज तू दरकार होछ एगोडा सब फिल्म रे भीतर सीन्स अछि एगोडा से कहनी बट ए वीडियो रे नै बट एगोडा फिल्म रे अछि बट बैटमैन रो कहया कथा से जेते लोग खराब हो जेते हो से होप रहया कथा से ट्रस्ट रहया कथा से भलो जिंसडा भीतर रहया कथा जोकर कहे भाई सब ये सब जिंस ना ऊपर तो गोटे पर्दा लगिछ पर्दा हटै दे रियल सेल्फ बाहर कर तो भीतर रो जो अंतर्निहित जिंस अछि ना ताकू बाहर कर तो भीतर एट द एंड ना ये रहउछि जे कोन कहलो केओस रहउछि बेसिकली भी समस्त भीतर से जिंस मचुछि चुल मचुछि जे भाई उड़े दवा किन समस्त चापी की रखुछंती ता पॉइंट हला ता पॉइंट ऑफ व्यू से तो सी प्रूफ करिया जंतला जे गथम किछि महान आत्मा जगह नो मते चेंज करियार अछि मते प्रूफ करियार अछि बैटमैन बोल ठीक अछि the machine of destruction. हां तो आउ जति सब मूवीज थाए से मूवीज मानकर एमती लास्ट को विलेन देखन ना क्लाइमैक्स जो सीन था हठात गोटे जिंसा से पृथ्वी ध्वंस होई जदी न करी ऑब्वियसली पृथ्वी ध्वंस होबनी बे तो हीरो मान लास्ट बंचै दे तुम जानि छ बट आदर से न था आदर लास्ट भी से चॉइस देता दीटा बोट अछंती गोटे पुलिस मान जो कैदी मानक बोट आ गोटे नॉर्मल लोक मानकर बोट दिजन जक जाउछंती डंगा दे जो कंदा कंदी कथम देगी एपटू सेपटू को सिटी रो मूव होउछंती तो दी जण भीतर जगह बम लगै दी आ दी आ बम रो चाबी आ पाखरे आ बम रो चाबी आ पाखरे जे चाहेबा जाको आगो फुटे देला आरो जण बचि जिवे एमती सी फास्ट पोर्ट्रे करे पर ता भीतर भी दी जण केही फुटाने बेसिक आंसर से तमे मूवी ऑब्वियसली देखि छ When the villain's जदी न देखि छ देखो भाई एबे भी फुणी कहूछि plan is to destroy the whole world, on a meta level, we the audience know that can't happen because there's probably going to be a sequel. But the Joker could have blown up both ferries, and the film could have had an Empire Strikes Back-esque ending, a powerful setup for the next film. Again, Batman and the Joker aren't competing for the survival of humanity. They're competing for the soul of Gotham. The stakes are personal, first and foremost. So now we've seen how the Joker is exceptionally good at attacking Batman's weaknesses, how he pressures him into difficult choices as they both compete for the soul of Gotham. But what is the cumulative effect of these things? What is the greater function of the Joker? With respect, Master Wayne, perhaps this is a man you don't fully understand either. Throughout the script, Alfred hints at the lessons Batman needs to learn. Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied, reasoned, or negotiated with. जेतले आमे देखौ जे गोटे लोक मारू जुगमे गोटे आतंकवादी उड़ौ जुगमे ता पछरे गोटे कारण थाए आमे सब देखौ जे तांको ब्रेन वॉश करा जाय थाए या फिर सब पछरे कि जोटे कारण थाए समस्त पछरे कि जोटे स्टोरी थाए तो बैटमैन खोजिरा जे आ पछरो स्टोरी कोन ये एमती करू जी कि से टाइम रे अल्फ्रेड को किछि जण लोक थांती जो माने पछरे कि कारण न थाए से माने काहे कि मारंती से माने काहे कि उड़ांती से माने काहे कि ध्वंसा विमुखी तांको चिंताधारा थाए किछि जण लोक थांती जाको भलो लागे दुनिया जळिवा देखिया पे बेसिकली ता थॉट प्रोसेस Some men just want to watch the world burn. In the beginning, Batman believes that criminals are simply after money, that there's a logical order to things. But he learns से लॉजिकली भाबुतला बट ये सेंति भाबु नतला not to underestimate his enemies, that his strengths can become weaknesses. Batman grows wiser because of the Joker. हां बेसिकली ऑफ कोर्स सेम कहल ना गोटे विलेन जिते तते पुश करियो तू तो कैरेक्टर जिते अधिक पुश करियो तू जिते अंडर प्रेशर रे चॉइसेस नबु बेसिकली हबु कल्मिनेशन ऑफ एवरी पॉइंट्स से जो तीनटा पॉइंट कला से जिंस पर तू गोटे कैरेक्टर रे चेंज आसियो तू आहुरी बेटर हो से गला बैटमैन गॉट वाइजर Know your limits, Master Wayne. Batman has no limits. Well, you do, sir.
Under the pressure of the antagonist, Batman learns that alone he does have limits. এইটি আসিলা যেতବେଳେ এই যে সিনটা দেখিଥିଲା না যেতବେଳେ হার্বিডেন্ট নিজକୁ କହିଦିଏ ଯେ ମୁଁ ହେଲା ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ କାହିଁକି କହିଦିଏ କାହିଁକିନା ସିଏ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ର ଟ୍ରୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ତା ବଦଳରେ ପଛେ ମୁଁ ଫସିଯାଏ ତ ସେଇଆ କହେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ଜୋକର ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ଏକା ଲଢ଼ୁନଥିଲା ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଲୋକ ଲଢ଼ୁଥିଲେ. But with the right allies, they can overcome any challenge. Batman's resolve deepens because of the Joker. People are dying, Alfred. What would you have me do? Endure, Master Wayne. And in the battle for Gotham's soul, he learns that he's able to make the difficult choices no one else can. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. I can do those things, because I'm not a hero. I'm whatever Gotham needs me to be. Batman भाई ये डायलॉग ମୁଁ ଯେବେ ଯେବେ ଦେଖେ ନା ଯେବେ ଦେଖେ ଭାଇ ମୋତେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା है बैटमैन जो डार्क नाइट देखिए वन ऑफ द फाइनेस्ट क्राफ्टेड डायलॉग यार लिखी जे नोलान लिखे भाई संलाप becomes the Dark Knight because of with the layering of Hans Zimmer legendary music. The Joker. The Dark Knight shines as an example of what happens when the forces of antagonism grow from the protagonist. तो से ऐसे कहे जे जोकर रॉ प्रेजेंस रे बैटमैन आहुरी साइन करे इट्स लाइक राति अच्छी बिली दिन जेतବେଳେ হয় তুমি তা প্রেজেন্স বুঝি পারো যে কাহিଁକି ଦିନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି इट्स लाइक दैट when they're inextricably ଯେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଭୋକ হয় ନା ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ या फिर ଭୟଙ୍କର ଶୋଷ হয় ସେତେବେଳେ ପାଣିର ରିଅଲ ଆବଶ୍ୟକତା ଜଣା ପଡ଼େ ରିଅଲ ଚମକ ଆସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ମୁଁ ଜିନିଷକୁ ସମପ କରି linked when they're two sides of the same coin. The Joker isn't a great villain because he has an insane laugh and acts unpredictably. He's great because he has a profound and specific effect on the story and on the protagonist. आ पूर्व वीडियो में जानी की देखैथिली काइना सेतरे से परफॉर्मेंस ऊपर भी से मेटिकुलसली परफॉर्मेंस ऊपर ही से देइथिला पॉइंट्स बट एथरे से कहिला जे खाली परफॉर्मेंस जोगु से कैरेक्टर एते मेमोरेबल हे जायनी कैरेक्टर मेमोरेबल हवार कारण हला काइना ता तार फिलोसफी भी सेति की एनरिच्ड अछि दैट्स व्हाई I think you and I are destined to do this forever. The Joker is the perfect antagonist for the Dark Knight. आ भीतर गोटे बिग फक अफ हेजी तो पॉइंट कोन हेजी ना ता बैटरी खत्म हेजी मझिरे मु जानिनी मु पटे स्ट्रीम करूची सेपटर बैटरी खत्म हेजी बट लास्ट लो खत्म हेजी आई थिंक लास्ट किछिटा रिएक्शन मिस हेतियो बट मु परफेक्ट टाइम रे धरनेली सो आई थिंक पॉइंट ला मु रैप जस्ट करियो जाउथली से रैप मु कर देली मते लागला सेपट कैमरा ऑन अछि बट कैमरा ऑन नथला ठीक अछि आज रो जोकर रो फिलोसफी केमति लागिला से विषय लेखो गोटे नुआ नुआ पर्सपेक्टिव धरिया कथा बेसिकली मु से यही कहया चाहूँ लास्ट रे जो पॉप जिनस गुड़ा जो रहा पॉप फिलोसफी जो गुड़ा कल्चरल कल्ट क्लासिक जिनस गुड़ा जो रहा तार पछर थॉट प्रोसेस से गुड़ा बनी केमती से भाभी केमती तो ये विषय जान जिते अधिक ना तो भावना से अधिक तीक्ष्ण हो ताकि जो खाली पॉप फिलोसफी करी या फिर एमती के रिएक्ट करना किसी मजादार स्ट्रीम करना गेमिंग जना नहीं आसे नहीं पॉइंट नुह पॉइंट गेमिंग स्ट्रीम यार मु बुझी पारे नहीं गेमिंग स्ट्रीम कोन केबे देखिया थरे गेमिंग स्ट्रीम देखिया गोटे केमती कोन चलछि से हिसाब से जदी के इच्छा करिया गेमिंग स्ट्रीम जना नहीं बट नॉट इंटरेस्टेड राइट नाउ लेट्स सी एमदी मन खोला चिंताधारा कहानी में कथा होतियो तो आज पे एतिकी थाउ ठीक अछि बाय